Hello everyone, welcome to OASHUB. My name is SUDEEP. I am the faculty in OASHUB. I used to take current affairs sessions of prelims as well as mains in the last year, OPSC 2022. Okay, so I will be taking some of the current affairs of prelims as well as mains in the upcoming days. So we will go for the first question. Consider the following statements regarding Deputy Speaker of Lok Sabha. We know Deputy Speaker was in news because there was a tussle for the post of Deputy Speaker between whom? The opposition and the ruling party. Okay. So the first statement, the Constitution of India specifies a time frame for the election of Deputy Speaker of Lok Sabha. The Constitution of India provides for the resignation or removal of the Deputy Speaker of Lok Sabha. An appeal can given to the Speaker against ruling given by the Deputy Speaker or any person presiding over the House in the absence of the Speaker. Which of the statements are correct? So the first statement, Constitution of India specifies a time frame for the election of Deputy Speaker. Actually, this statement is false. If you go for the articles ranging from 93 to 97, in the article 93, it's been specifically mentioned that the Lok Sabha shall, as soon as may be, elect Speaker and Deputy Speaker. The word, the sentence, as soon as may be. This is a very ambiguous statement and it doesn't give any time frame. So this statement is wrong. The Constitution of India provides provisions for the resignation or removal of the Deputy Speaker of Lok Sabha. If you go on for the Article 94, so if you go for the Article 94, the Constitution of India itself says that Deputy Speaker and the Speaker will tender their resignation to each other. I will give you then what happened in the Constitution Assembly in 1949. There was a debate between H.V. Kamath and Ambedkar. Okay. H.V. Kamath, what he said that the Deputy Speaker and the Lok Sabha Speaker should tender their resignation to whom? The President. But Ambedkar at that time said that both of the office are from the House of the People, Lok Sabha. So involving an executive, it won't be fair. So executive पाखे सब control पड़ा ऐसी ये सब जिन सारे. So that should be left it and no more further amendments is required in 94, Article 94. Okay. So the statement is correct. The third statement, an appeal can given to the Speaker against a ruling given by the Deputy Speaker or any person presiding over the House in the absence of Speaker. Let me tell you, Deputy Speaker and the Speaker both are same rank. Constitution all the same much. They are not. Deputy Speaker is not subordinate. No. The rank is same. It's just if there is no Speaker, then the presiding will be taken by the Deputy Speaker. So in case of any ruling given by the Deputy Speaker, it won't be overruled by the Speaker if it is a bond of contention. It's also said by the Ambedkar. I mean, this just is post and they are elected by the House of the People, right? So the third statement, the appeal can be given to Speaker. No, it's a wrong statement. So the answer is D. Yeah. Yes, and cutting and something. Deputy Speaker since the first Lok Sabha. Jehetu opposition party asking for this post, Deputy Speaker post, we should know the first opposition, first time opposition thile, and who was the Deputy Speaker. Obviously, ruling party always have the command on this Deputy Speaker post. But the first time, G.G. Swell, you should remember this name, G.G. Swell. He was from Meghalaya, from the party APHLC, All Party Leader Hill Conference. Okay? G.G. Swell. He was the first Deputy Speaker from the opposition. And then the convention changed. Okay, the opposition can have this. Opposition 91-96 BJP thile ruling party, but the opposition S. Mallikarjun. And we know about this. Vajpayee ji government thile 99 to 2004 PM Said. Who is PM Said? He was an MP from Lakshadweep. He was an MP from Lakshadweep. He died in a conference in Seoul, South Korea. So he was a deputy speaker at that time in the BJP government, and he was from Congress. Okay. So just remember this name. So it was out of convention. And how the speaker and deputy speaker are elected?
simple majority. Okay, half of the house. So the second question, it's related to Bannerghatta National Park. The first statement, it is located within the vicinity of Nilgiri Biosphere Reserve. The second, it hosts India's largest leopard safari. It is home to elephant and is situated in the Anekal mountain region. Why it was in news? Because of this statement. Because the BNP is opening largest leopard safari in the world. The only thing you should know that, is it located within the Nilgiri Biosphere Reserve? It is not actually. It is Kerala, it is Tamil Nadu. The Nilgiri Biosphere Reserve, area is spread out. Okay, and the Bannerghatta National Park is situated somewhere here. It is south of Bangalore and in nearby Mysore. So it is not at all located within Nilgiri Biosphere Reserve. This is a wrong statement, and it is in news for the India's largest leopard safari. It is right. The third statement, it is home to elephants and is situated in the Anekal mountain region. It is completely true. Say elephant conservation park bhi achi. Mysore re. So they're conserving elephant as well within the vicinity of BNP. And what we know about the Nilgiri, okay, elephant conservation park to the history, we should know this project was launched in 1992. Okay, and about leopard, you should know this IUCN Red Book list. IUCN Red Book account status. It is not so about vulnerable. I checked from the WWF data. It is near threatened. So there is no threat. Threat is very less. So leopard, because leopard sankhya bhi bahut achi. It is spread out in 18 states. So obviously tankara number is very staggering. So no problem in that. So the answer is only 2. How many questions? How many of the statements? Both of the statements are correct. This is the this is the Nilgiri Biosphere Reserve, and you should at least know how many of the national park are. Nagargol, Bandipur, Wayanad, Muduvai, Mukurti, Silent Valley. These are the prominent national park available within the vicinity of Nilgiri Biosphere Reserve. Bannerghatta is not there. I will check but it is not there. So we'll go for the third question. Regarding Chandrayaan 4, there was some space conference meeting in I think in Bangalore. So S. Somnath was speaking about Chandrayaan 4 mission. Chandrayaan 4 mission will be on 2028. It's nowhere close to nowhere in 2025. It's 2028. But tankar jo preparation full on chalchi okay. The first statement, it is a joint lunar polar exploration mission by India and France. There are total 5 spacecraft modules in the mission. It is an unmanned lunar lander and rover mission similar to its predecessors. It is to be launched in one go and will require docking contrary to its predecessors. So, take a pause for this question as it's a recording session. Try to attempt this question. It's a very nice question. Okay. So, the first statement, it is a joint LUPEX between India and France. This is absolutely wrong. It's a JAXA. JAXA, Japan Space Agency. It is taking the charge. Tapre Chandrayaan 4 mission there is something. It's a complex mission. Okay. Kind complex में कुछ. There are total 5 spacecraft modules in this mission. This is absolutely right. कहीं I will tell you. देखो, I've मुझसे modules से आनी चाहिए. I'll show you the modules. देखो, in Chandrayaan 3, Chandrayaan 4, there are 5 modules. ठीक है? This propulsion module, descender module, ascender module, transfer module, and re-entry module. ठीक है? And it is very important because this Chandrayaan 4 will bringing the rock from moon. And Chandrayaan 3 कौन था? They are not bringing anything. They were just surveying at the moon. ठीक है? So this mission is very much complex. And Chandrayaan 3 रे कौन था? There were 2 modules plus 1 rover. गोटे rover था. एडी कौन अच्छी? Chandrayaan 4 रे 5 modules. I am writing this because it is very important for the prelims perspective. कितना modules अच्छे से पहुँचा दो. Okay.
सो जदि मु टिके टेक्निकल डिटेल्स जी मु कहि परिबी देखो propulsion module टा कोन ओके सो फर्स्ट यू थिंक दिस LBM Mark 3 it is a launch vehicle. It is a powerful rocket. It consists of solid, liquid and the cryogenic engine. ठीक अच्छे it will lift off and ये जो मॉड्यूल को से स्पेस रे पकाइबे propulsion module काम हला एट देखो एटी propulsion module हला ये धरती रे चक्कर लगेबो ताको propel करिवो कोडी टू द लूनर ऑर्बिट को सर्कुलर लूनर ऑर्बिट को propel करिवो तापरे propulsion module detach हो तापरे propulsion module detach हो तापरे कोन हो obviously धरती रे चक्कर काटले कोन अछि तापरे it is left with what this one descender and ascender module ठीक अछि जदि descender and ascender module रे अछि so it will try to descend on the lunar surface ठीक अछि it will try to descend on the lunar surface तापरे तमे descender module कोन सेटा सब से विक्रम लैंडर obviously landing करछि descender module से डिसेंडर मॉड्यूल भीतर कौन बाहर रोवर बाहर जमी प्रज्ञान रोवर बाहर से तो को रोवर थबो इसरो तार डिटेल्स कर दबो तापरे इट विल ट्राई टू कलेक्ट द रॉक्स लिथ्स सब्सटेंसेस व्हाटएवर अवेलेबल इन द मून सरफेस तापरे कोन करिवो ऑब्वियसली सेट तो रहिबोनी तापरे ऊपर को आसीबो विद द हेल्प ऑफ असेंडर मॉड्यूल ठीक अछि तापरे कोन हो असेंडर मॉड्यूल तापरे एटी कोन हो हियर आउट जीएसएलवी माने ये तो LBM Mark 3 तो जाइथिला किंतु तापर किछ समय पर PSL भी लॉन्च करथिला इट मींस टू लिफ्ट ऑफ कहीं बिकॉज दिस मिशन इज कॉम्प्लेक्स राइट हमको जिनस आनिबार अछि सेति पई ये मिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स तो कोन हबो तापर ट्रांसफर मॉड्यूल इट विल गेट अटैच्ड माने डॉकिंग करिवो ट्रांसफर मॉड्यूल विल गेट अटैच्ड टू दिस असेंडर मॉड्यूल ठीक अछि एंड तापर कोन हबो दिस ट्रांसफर मॉड्यूल व्हाट विल डू this transfer this code करिवो ट्रांसफर कोड करो अर्थ ऑर्बिट को and it will detach and it will left off with कोन थरे रहबो ascender module रे कोन अछि the rocks of moon then it will connect to the re-entry module से connect एटा सब डॉकिंग होछ re-entry module and re-entry module रे it will transfer the rocks into the re-entry module देखो धरती रु पांचटा मॉड्यूल जीवो वापस आसीबो ओनली री-एंट्री मॉड्यूल जस्ट रिमेंबर दिस एंड री-एंट्री मॉड्यूल कोन छै रॉक्स अछि तो ऑब्वियसली ताको भी डिसेंड करिवार अछि डिसेंड जदि करिवो कोडी करिवो दैट विल डिसाइडेड बाय द इसरो एंड इट माइट बी इन द लैंड डेजर्ट या इसरो कुछ सेफ हाउस जदि खोली छी इट्स ओके बिकॉज दिस मिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स तो जानि परछन ना टेक्निकल केते तरह प्रॉब्लम अछि so if we get back to the question it is an unmanned lunar lander and rover mission similar to its predecessor मतलब Chandrayaan 3 correct है ना lunar lander जाउछि it is to be launched in one go and will require docking contrary to its predecessors it requires a docking ठीक अछि do you think it is launched in one go मु कहथि ना either PSLV नॉलेज GSLV जाय PSLV and GSLV decided by ISRO in 2000 पर जाना पड़ो कि कौन यूज कर किंतु LBM Mark तो यूज करेंगे ना बिकॉज ऑफ इट्स हेवियर रॉकेट 3टा मॉड्यूल अच्छी सो इट इज लॉन्च इन 2 गो मैंने दुथर लॉन्च हो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग द फोर्थ रॉन्ग अच्छी 4 रॉन्ग अच्छी द आंसर व्हाट इज द आंसर 2 and 3 राइट द टोटल 5 spacecraft so 2 and 3 is the answer correct answer okay so I बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन को जस्ट सिंपलीफाई करने चेष्टा करते तुम ठीक है So the next question, identify the most accurate options refer to the geography features found in India. देवरिया ताल, घेपाट घाट, गुरुडोंगमा and रुपिन. Actually एटा कौन पे न्यूज़ रे थिला? इसरो तार सैटेलाइट सर्वे रु जिनसे गोटे बाहर कर 178% ग्लेशियल मेल्टिंग हो ग्लेशियल मेल्टिंग कोडी हो घेपांग घाट so देवरिया ताल, घेपांग घाट and रुपिन these are in हिमाचल प्रदेश. तो एटा अलग खतरे की घंटी बच्चे ठीक अच्छे सो वेट इज गुरुडोंगमा इट इज इन सिक्किम सो आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शंस इट विल बी ग्लेशियल लेक्स ठीक अच्छे इट्स नॉट क्रेटर नॉट श्रिंकिंग नॉट फ्रेश वाटर तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम कौन अच्छे इफ इट इज बीन मेल्टिंग सपोज ये ग्लेशियल अच्छी मैंने ग्लेशियर वाटर जो अच्छी ये हिमालय थब सपोज ये हाई वे मैंने बहुत मेल्टिंग बहुत रैपिडली अच्छी ऑब्वियसली
आर जो वॉल्यूम अच्छी इट विल बी रखिपर इट विल ब्लास्ट सो कौन वाटर गोटे तौक आसो कौट आस वाटर द लो लेइंग एरियाज भाव तुम यहाँ भाव 18,000 फीट अच्छे 18,000 फीट बुझीपार अराउंड 6.6 किलोमीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल एंड एडी लो लेइंग एरियाज अच्छी मैंने मुझे हिमालयन स्टेट को कहबी से अराउंड 5,000 फीट अच्छा मैंने 1,800 मीटर अच्छा बुझीपार तो 18,000 फीट रू 5,000 फीट को जो the water is going to come down it is so heavy kinetic energy is very high तो obviously कौन हम it will be a catastrophic impact जमी सिक्किम रही जून मसरे जमी हिमाचल प्रदेश रोचे कौन इट्स ए वेरी कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ना सो यहाँ थी खतरे घंटे तो हम भाव 18,000 फीट रू 12,000 फीट 5,000 फीट को पानी बहुत स्पीड रस्ट सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ठीक है एंड गुरुडोमर लेक इज इन सिक्किम डू यू नो इन सिक्किम रे गुरुडोमर लेक इट इज द सोर्स ऑफ कौन तीस्ता रिवर वाज बोर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बेंगल एंड ममता बनर्जी had some मतलब ममता बनर्जी डिस्प्लेशर थिला तीस्ता रिवर को लेकर बिटवीन मोदी जी एंड द बांग्लादेश पीएम है ना तो यू शुड नो दिस ओके तीस्ता रिवर मैंने कौन एठू लाचेन रिवर आस लाचुंग रिवर आस एंड ऑल आर द सोर्स ऑफ व्हाट हिमालयन रिवर्स तब एठू आस यू शुड नो दिस एंड हाँ लास्ट ईयर कौन है ये गोटे चुंगथांग वैली थिला चुंगथांग वैली देखो एडा लाचेन रिवर एडा लाचुंग रिवर है लाचेन लाचुंग रिवर एटी चुंगथांग वैली है तो दिस इज कॉल्ड तीस्ता रिवर एटी लास्ट ईयर कौन होता ये गोटे चुंगथांग डैम थिला एंड इट वाज प्रोड्यूसिंग 1 gigawatt ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 gigawatt ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपेंड जो लास्ट जो ग्लेशियर बर्स्ट होता से डैम को ही नष्ट कर देता से डैम ही नहीं हो मतलब पूरा बर्बाद हो जाए सो भाव पार्छ केते लॉस है एंड इट इज वेरी इंपोर्टेंट ऑब्वियसली माने गोटे पहाड़ी जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे तो टिके प्रॉब्लम तो रही लेट मी गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एक्चुअली कौन है न्यूज अच्छे एटा तो एबे का एमएसएमई मिनिस्टर किए एटा हाम एचे हिंदुस्तान आवाम मोर्चार पार्टी एटा पार्टीर प्रेसिडेंट ये ठीक अच्छे सी एबे हला कैबिनेट मिनिस्टर एबे कौन देछि गवर्नमेंट टू अमेंड 2006 एक्ट टू स्ट्रीमलाइन डिस्प्यूट्स ओवर डिलेड पेमेंट्स टू एमएसएमईज डिलेड पेमेंट्स एक्चुअली मु सरल बुझे दूचे डिलेड पेमेंट्स कौन अच्छे इफ आई एम ए बायर और सेलर तो मो पाखे भी गोटे कंपनी अच्छी एंड आई वांट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एमएसएमई मत से रॉ मटेरियल्स दब या फिनिश प्रोडक्ट दब मु सेल करी या एमएसएमई मत रॉ मटेरियल्स देले मु से रॉ मटेरियल्स को गोटे फिनिश प्रोडक्ट से ताकू फिनिश करी सो व्हाट हैपेंड जो बायर्स अच्छा ना सो दे डोंट सेटल द पेमेंट्स वेरी सून सपोज बायर्स आमको 100 टका ना ना तो 100 टकर सेटलमेंट इट इज बहुत लेट कर से इंडस्ट्री से गोटे प्रॉब्लम अच्छी भितर ओके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कला लास्ट एप्रिल 1 गोटे रूल्स एप्रिल 1 2024 गोटे रूल लागू होती आईटी सेक्शन माने इनकम टैक्स रो सेक्शन 43 को अमेंड कर माने ये जो पेमेंट जो बायर्स जो एमएसएमई को दवा कथा इफ यू 45 डेज विदिन तुम जो पेमेंट न कर तुम उपर पेनल्टी लगे माने देख गोटे बायर नेट प्रॉफिट कौन हम व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट तार सेल्स जहाँ अच्छी माइनस परचेजेस माइनस एक्सपेंडिचर है सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंडिचर सपोज तार सेल 150 टका हो सी परचेज कर एमएसएमई टू 10 रुपीज एंड तार एक्सपेंडिचर हो 40 तार नेट प्रॉफिट के 100 रुपीज बुझीपार नेट प्रॉफिट 100 रुपीज टैक्स को ऊपर लगे 100 रुपीज ऊपर टैक्स लगे सपोज 5% टैक्स लगे एमएसएमई ताले के 5 रुपीज टैक्स दब किंतु जदि सी जो परचेज जोड़ा कर ठीक टाइम रे पेमेंट कर विदिन 45 डेज तार भी अलग अलग क्राइटेरिया अच्छे मुझे सिंपल वे बुझाऊँ ताले कौन हम तुम टैक्स लगे क्या नेट प्रॉफिट जोड़ा है 100 प्लस 10 रुपीज माने ए परचेज ऑफर लगी तुम जो परचेज आनी माने 110
ऊपर जहाँ टैक्स थब सपोज 10% टैक्स लगे या 5% अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द अमाउंट दे हैव टेकन ठीक अच्छे सो यहाँ कौन हम ऑब्वियसली टैक्स माने कौन तो इट्स अ बर्डन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहूँ कि तुम 45 डेज भितर तुम क्रेडिट कर एंड ये सब जिन कौटे समाधान पोर्टल रे समाधान पोर्टल किए रजिस्टर कर जहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर थब ठीक है गोटे एमएसएमई दे शुड हैव ए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ना से एमएसएमई रे किसी करें या टैक्स बेनिफिट किसी पाइबे ठीक अच्छे सो द फर्स्ट क्वेश्चन एटा पूरा स्टैटिक क्वेश्चन अच्छे PDM enterprises are those with investment in plant and machinery of equipment of not more than 10 crore देखो आमर कौन अच्छे माइक्रो स्मॉल तापर मीडियम है एटा कौन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर माइक्रो रे 2020 रे नोटिफिकेशन आसला परे माइक्रो इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमम 1 crore एंड तक टर्नओवर केते 5 crore तुम एटलिस्ट ए दीटा मन रख इट शुड बी 1 crore एंड 5 crore ठीक अच्छे तापर ताकू इंटू 10 करदेव स्मॉल को 10 crore एंड टर्नओवर फॉर स्मॉल द इन्वेस्टमेंट शुड बी 10 crore एंड इट शुड बी 50 crore ठीक अच्छे तापर से जो मल्टीप्लाई फैक्टर अच्छे बाय 2 करदेव माने इंटू 5 एडी इंटू 10 है तापर इंटू 5 करदेव तो यहाँ कौन मीडियम 50 crore इन्वेस्टमेंट एंड द टर्नओवर शुड बी 250 crore ओके so it कौन लिखा है मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोस विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी ऑफ नॉट मोर देन 10 crore मीडियम इंटर मिनिमम 50 crore इन्वेस्टमेंट दरकार तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग तापर प्रायोरिटी सेक्टर ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर सी कौन अच्छे ओनली माइक्रो एंड स्मॉल एक्चुअली व्हेन आई सॉ द PIB रिपोर्ट PIB रे जो थिला जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रे होल MSME भी आसो मीडियम एंटरप्राइजेस भी आसो नॉट ओनली माइक्रो एंड स्मॉल सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग MSME accounts for 90% of businesses and 50% of GDP worldwide. Adam statement United Nations side to teach. United Nations also have the criteria for the MSME, but it will be depending upon the GDP of the country. ठीक अच्छे एटा आमर 10 crore अच्छे स्मॉल रो मे बी यूरोप 100 crore हो पारे किसी भी हो पारे बुझी पार्छ सो द आंसर इज ओनली 3 ठीक अच्छे सो एटा देखो एटा तार स्ट्रीमलाइन देछि एटा ओके देखो एटा UN साइड रो वन MSME अकाउंट फॉर 90% ऑफ बिजनेसमैन एंड 70% ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट एज पर MSME बिकॉज पॉवर्टी को रिड्यूस करछि जॉब दउछि स्किल जॉब्स भी दउछि 50% ऑफ GDP को कंट्रीब्यूट करछि सो इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे सो आई विल वाइंड अप द सेशन होप यू एंजॉय द सेशन इफ यू रियली लाइक द कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल okay thank you